ऑलराइट। सो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा आज का जो सेशन है वो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में है। और हमारे आज के जो स्पीकर हैं वो काफ़ी मशहूर हैं, डॉक्टर मोहम्मद फरियाद। अ, तो डॉक्टर फरियाद जो हैं, he received his BSc degree in mathematics and physics in 2002 from the University of Punjab. And then he got MSc and MPhil degrees in electronics from the Quaid-i-Azam University in 2006 and 8, and PhD in engineering science and mechanics from the Pennsylvania State University in 2012. He worked as a lecturer in the Quaid-i-Azam University from 2007 to 9, as a postdoc scholar in the Penn State from 2012 to 14, and now he's associate professor at LUMS. And his research focus is on the interaction of light with matter, metamaterials, and complex materials. And recently, डॉक्टर फरियाद ने मुझे बताया कि अब उनकी रिसर्च जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ मुंतकिल हो रही है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग पे ही आज हम उनसे सुनेंगे। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह है कि अराउंड 45 मिनट्स डॉक्टर साहब की टॉक होगी, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। आई एम नॉट श्योर कि अगर डॉक्टर फरियाद साहब दौरान टॉक के दौरान भी क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो फिर आप लोग अपना हैंड रेज कीजिएगा या फिर चैट में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, तो फिर हम वहां से भी क्वेश्चन ले लेंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच शबाज, और बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन का, और शुक्रिया मुझे मौका देने का लोगों से बात करने का। तो आई एम रियली हैप्पी। और जो है मुझे जो आप जब स्पीकर का आपका इशू चल रहा था तो मैंने लोगों से पूछा था कि कितना फेमिलियर है क्वांटम कंप्यूटिंग से। तो इट लुक्स लाइक जो 3-4 रिस्पॉन्स आए हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनफेमिलियर विद क्वांटम कंप्यूटिंग। तो जो मेरी टॉक है वो मैं फिर इस तरह से करूँगा कि जो एडवांस कुछ चीज़ें हैं वो स्किप कर दूंगा, एंड आई मोस्टली फोकस ऑन द बेसिक्स। और जिस तरह से शबाज जिक्र कर रहे थे कि पहले जो है वो मेरा फोकस कंप्यूटेशनल ऑप्टिक्स, कंप्यूटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पे था, एंड फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स आई हैव बीन लर्निंग क्वांटम कंप्यूटिंग। और जो टॉक है मेरी वो भी मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर की है कि अगर कोई नया बंदा क्वांटम कंप्यूटिंग पे आता है, especially from the physics side, but let's say generally from other areas as well, तो किस तरह से अगर क्वांटम कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस की जाए तो इट वुड बी द इजीएस्ट। और उसमें जो मेरा मकसद होगा टॉक का बेसिकली वो ये होगा कि आई वुड लाइक टू ट्राई टू explain how quantum computing is different from classical computing, just so that कि आप लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट इसमें पैदा हो, और आप लोगों को अगर इफ यू बिगिन टू अप्रिशिएट कि क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करते हैं एंड व्हाई क्वांटम एल्गोरिथम्स गिव एडवांटेज ओवर क्लासिकल, एंड देन यू नो अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग में इफ यू गेट इंटरेस्टेड, अब बाद में ज़ाहिर है देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज ऑनलाइन भी हैं जो जिनसे आप सीख सकते हैं। तो I'm, going through the presentation like this. I'll talk about the basic principles of quantum computing. और उसमें जो है वो I'll try to compare with the classical world as well. ठीक है, क्योंकि I assume के काफी सारे लोग जो हैं वो क्लासिकल फिजिक्स से तो फेमिलियर ही होंगे। हम क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसको जस्ट मैकेनिक्स हम कहते हैं, वो हाई स्कूल से पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जो यूजुअल कंप्यूटर्स हैं, जो हमारे लैपटॉप्स या मोबाइल फोन्स वगैरह हैं, I'll refer to them as classical computers. So I'll try to uh, compare the principles and working of quantum computer with classical, and then also I'll try to go through one algorithm quickly, just to show how quantum algorithm work. I don't expect you to maybe understand the algorithm right away, but hopefully you
get to know how quantum algorithm works. And then at the end, I also have a couple of slides just to motivate people, what are the applications of quantum computers, and also what are the career paths in it, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो. So let me start from classical mechanics, okay? I'll try to be brief in classical and quantum mechanics before I go to quantum computer, uh, so that we spend more time there. So classical जो हमारी physics है, if you recall, तो we study equations of motions and Newton's laws. और उसमें जो बेसिक हमारा assumption जो 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 वर्किंग होती है वो ये है कि इफ यू आर गिवन पोजीशन एंड मोमेंटम, या जो लोग थोड़ा बेसिक अगर बेसिक्स में है तो यू कैन थिंक ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी. सो अगर किसी भी पार्टिकल की यू आर गिवन अ पोजीशन एंड वेलोसिटी, then you can take Newton's laws and then predict the position and velocity at some time, later, or maybe even you can predict the past as well. You can predict what was the position and velocity sometime earlier. So we can go both ways with that. So my question is that, when we are doing all of this, what are like sort of the basic assumptions about the universe that we have in our mind? So if there is anybody, who is not from physics side, I would like, if they can, unmute and answer. And just to, quickly answer one question that Shabazz raised. So I would be happy to take questions, as we go along. So let's try to make it as a discussion. मैं देख रहा हूँ कुछ थोड़े से लोग हैं, शायद 10-15 लोग हैं, तो we can, take questions. उससे ये है कि I'll be able to set up the pace for the next 1 hour accordingly. So anybody would like to volunteer to answer this thing, that when we are working in using Newton's laws and equations of motion to make predictions on positions and velocities of particles, so what are our working assumptions? Like what we are assuming, how the universe operates. Okay, so let me, give my answer. Shabazz has, unmuted. Shabazz, would you like to say something? नहीं, मैं बस लोगों को जरा तहरीक दिलाना चाहता था कि आगे बढ़े. कोई मसला नहीं, कोई किसी को सब कुछ पता नहीं होता, स्टूडेंट्स है ना. तो जो भी बिल्कुल आइडिया माइंड में आता है लाजमी कंट्रीब्यूट करे, इससे सीखता है इंसान. बिल्कुल. So I post for more than, what they say is the awkward silence. But anyway, so let me give, my answer. And this is that, we assume we have a certain postulates or assumptions in our mind about the universe. And number one of those postulates is that we assume that everything that there is to be known about the state of the particle is actually given by its position and its velocity. If we know this, we know everything that there is to know about the particle state. And we have this sort of postulate of, classical physics in the back of our mind. And then, there are more postulates. For example, Newton's law is another postulate. We assume that, the universe works according to this. And then there is another very important postulate about classical physics that we don't explicitly say, but that we take it for granted. Okay. And that is that we assume that the measurements don't do anything to the state of the system. We imagine that a football is going, along, and we are trying to, let's say, measure its position and velocity by maybe putting some laser light onto it, and we are using some Doppler effect or anything. So we assume that, the measurement doesn't change the state of the system itself. So like, you can say postulate number one is that its state is given by position and momentum.
Postulate number 2, the measurements don't disturb the system, and then maybe postulate number 3, the system state is given by Newton's law, and so on. So these are the working postulates over which the whole building of classical mechanics is constructed. But then, in early last century, people discovered that if we keep these working postulates, there are some things that we cannot explain using classical physics. For जैसे कि जो जब गैसेस इनक्लोज की लोगों ने ग्लास ट्यूब्स के अंदर, और उनमें से कैथोड रे पास हो रही है, तो उससे जो लाइट निकलती थी, जब स्पेक्ट्रम उसका देखा, तो वो नजर आ रहा था जैसे उसमें ना डिस्क्रीट लाइंस हैं बजाय इसके कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के। तो इस तरह की चीजें और बहुत सारी और प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी यूजिंग द क्लासिकल मैकेनिक्स। एंड देन पीपल रियलाइज that these postulates are actually not what the universe is operating on. There are other more fundamental postulates. Okay, universe is like, and one of that postulate is that the state of the system is not given by its position and velocity, but it's actually given by a vector of complex numbers. Okay, and that vector has a magnitude v. So that was like one fundamental postulate which was different from classical mechanics. इसके अलावा हमें ये पता चला कि हम जो क्लासिकल वर्ल्ड में अज्यूम करते हैं कि जी मेजरमेंट्स डोंट डिस्टर्ब द सिस्टम, दैट्स नॉट ट्रू। जो मेजरमेंट्स हैं इन जनरल वो सिस्टम की स्टेट को खराब भी कर सकती हैं। सो वी हैड टू मॉडिफाई द मेजरमेंट प्रिंसिपल, एंड देन देयर वाज एक्चुअली अनदर पोस्टुलेट रिलेटेड टू मेजरमेंट दैट द स्टेट ऑफ द सिस्टम, जब हम उसको मेजर करते हैं तो व्हाट वी गेट is actually a probabilistic answer. That let's say अगर आप हाइड्रोजन एटम इमेजिन करें और उसमें फर्ज करें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऐसी स्टेट में है which is like a mixture of ऑर्बिट 1 and ऑर्बिट 2. सो जब हम उसको मेजर करेंगे तो जो मेजरमेंट प्रोसेस है वो सिस्टम को कोलैप्स कर देगा आइदर इन ऑर्बिट 1 या ऑर्बिट 2, अगर हम उस को एज अ फंडामेंटल बेसिस यूज कर रहे हैं। तो मेजरमेंट से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो बाज़ औक़ात ऑर्बिट 1 होगा, बाज़ औक़ात ऑर्बिट 2 होगा, एंड देयर इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी, हो सकता है 30% चांस है कि वी फाइंड द पार्टिकल इन ऑर्बिट 2, और 70% चांस है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट 2 में। एंड सो इसी तरह जो दूसरे सिस्टम्स हैं उनके बारे में पता चला कि जब हम मेजर करते हैं तो फॉर द आइडेंटिकली प्रिपेयर्ड सिस्टम बाज का रिजल्ट कुछ और आता है, बाज का रिजल्ट कुछ और आता है। तो इससे हमें ये पता चला, एक तो ये पता चला कि जी जो मेजरमेंट्स है वो डिस्टर्ब करती हैं, प्लस मेजरमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक हैं, और दूसरा ये कि जो सिस्टम्स हैं वो ना सिर्फ के एक स्टेट या दूसरी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बल्कि उनके जो सुपरपोजिशंस हैं या लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं उनमें भी एग्जिस्ट कर सकती है। कि कि जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में वो सिर्फ ऑर्बिट 1 में भी हो सकता है, ठीक है, दैट्स वन स्टेट। ऑर्बिट 2 में भी हो सकता है, दैट इज अनदर स्टेट। ऑर्बिट 3 में भी हो सकता है, दैट्स स्टिल अनदर स्टेट। लेकिन इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि वो एक खास कॉम्बिनेशन है ऑर्बिट 1 और ऑर्बिट 2 का, उसमें भी हो सकता है। सो वी कॉल इट द सुपरपोजिशन स्टेट। सो ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, दिस गिव राइज टू मेनी अदर फिनोमेना। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आप एक की बजाय दो हाइड्रोजन एटम है, कि एक हाइड्रोजन एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट 1 में है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन 1 में है, इसमें ऑर्बिट 2 में है, इसमें ऑर्बिट 2 में, एंड सो ऑन। सो ये पॉसिबल सिस्टम स्टेट है। फिर ये है कि इनके भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो ये जो मल्टी पार्टिकल स्टेट्स के कॉम्बिनेशन हैं उससे वी रियलाइज कि देयर आर एंटेंगल्ड स्टेट्स एज वेल। मैं इस टॉक में आई वोंट बी टॉकिंग टू मच अबाउट एंटेंगलमेंट, but this is just to give you an idea of how quantum mechanics is very fundamentally different what we used to think about how the universe worked, which we call classical mechanics. So quantum mechanics के जो principles हैं या postulates हैं, these are actually our latest knowledge about the universe. And the classical mechanics we know, no, it's only in sort of approximation that works good when we are dealing with the large bodies most of the time on planet Earth. So let me stop here and you maybe invite a question or two
about the quantum and classical mechanics and their difference. कि किसी का कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर लें या फिर चैट में सवाल कर लें, जो अभी तक बात हुई है। Okay, excellent. So it means that most people are clear. Let me now go to just a brief introduction to how classical computer work, or let's call them electronic computers. Okay, so these are the computers that most likely you are using to interact with me and Shabazz right now, and we are getting this presentation. So ये जो हमारे सारे computers हैं, they basically work. Uh, आप इसको ना दो तरह से सोच सकते हैं. Either you can imagine it as an abstract, machine. Let's say as a Turing machine. So a Turing machine is like a finite state machine. कि इस machine की एक fixed number of states हैं, and then the program is just a set of instruction which tells the machine to go from one state to another state to another state and so on. And by coming up with an algorithm that sequentially takes us from one state to another state to another state, we can solve a problem. So that's how the programming works. And on the hardware side, these computers, they're mostly based on transistors. The transistors है ना, like if you imagine NPN or PNP type transistor in your mind, जो simple है. So they're essentially like controlled current devices. कि जिसमें there's one terminal, जो उसके ऊपर जो potential it controls how much current flows through the other two terminals. So we assign, let's say, logical zero if the current is giving rise to a voltage, let's say that is between 0 and 1 volt, and we assign a logic level 1 if maybe the voltage between some terminal is between 4 and 5. So ये जो 4 और 5 वोल्ट्स के दरमियान में वोल्टेज है, या 0 और 1 वोल्ट्स के दरमियान में जो वोल्टेज है, this means in terms of current कि maybe there's like one picoampere of current that is flowing, and that is logic 0. And if there are like 100 picoamperes, that might be logic 1. And that 1 picoampere or 100 picoampere corresponds to like trillions electrons. और ये जो ट्रांजिस्टर सारे बने हुए हैं, अगर लेट्स से आप लॉजिक जीरो की बात करें, लॉजिक जीरो का मतलब है कि जो ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स हैं उनके दौरान मे बी देयर माइट बी 1 ट्रिलियन to 10 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन दैट आर फ्लोइंग. और लॉजिक वन का मतलब है देयर माइट बी 100 ट्रिलियन to 1000 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन दैट आर फ्लोइंग एंड गिवन राइज टू दैट करंट. अब इसमें देखें कि हमारे पास टॉलरेंस कितनी ज्यादा है. Like couple of trillions of electrons, going up and down doesn't make a difference in logic 0 and logic 1, because these computers and these transistors, इनके जो logic gates हैं सारे, they're based on these sort of average behavior of electrons that are flowing through it. If the average is low, it's logic 0. If average is high, it's logic 1. और ये जो असल में इतनी ज्यादा टॉलरेंस है, this has given us computers that are extremely good, क्योंकि इनके अंदर एरर का चांस जो है इट्स लाइक 1 in trillion calculation. It's so low कि इस वक्त most of the computers, they are coming without any error correction that is being happening on the computer. जब कंप्यूटर शुरू शुरू में बने थे ना ट्यूब्स के साथ 1920s में, उस वक्त जो डायोड्स और ट्रायोड्स ट्यूब्स थी, उस वक्त कंप्यूटर्स के अंदर वी यूज्ड टू यूज एरर करेक्टिंग कोड्स. क्यों? क्योंकि some of the tubes would be going off and on all the time. Transistor उड़ रहे हैं when you have turned on the computer, and there were a lot of errors. लेकिन इस वक्त कंप्यूटर इतने अच्छे हैं हमारे, we don't even use the error correction anymore. They are so good because the errors are so low. So this, और वो जो क्वालिटी है वो आ यहाँ से रही है, that we are working with like an aggregate or an average behavior of electrons or particles which are flowing through the devices. And on the other hand, जो quantum computers हैं, which are people are building right now,
they work with individual quantum systems. जी शबाज? यहाँ पर आपने बात की एवरेज बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते थे, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, ये हाँ, जो कि ट्रिलियंस ऑफ जैसे एक इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांजिस्टर है ना, हाँ जी, तो ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट है, अगर उस पे वोल्टेज है ना, लेट्स से 0 से लेके 0.5 वोल्ट्स के दरमियान में, वी से दैट्स लॉजिक 0। और अगर आउटपुट पे वोल्ट है लेट्स से 4 से लेके 5 वोल्ट्स, तो वी से इट्स लॉजिक 1। अब ये जो इतना डिफरेंस है ना वोल्टेज में, 0 से 1 वोल्ट या 4 से 5 वोल्ट, इसके अंदर देयर इज लाइक अ ट्रिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है कि लेट्स से 100 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इट्स 4 वोल्ट। अगर 1000 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इट्स लाइक 5 वोल्ट। सो a few trillion electrons going up or down doesn't make much difference. So because we are working with the average sort of behavior, we are not concerned with individual single electron कि जी एक इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो गया तो मसला हो जाएगा। There's nothing like that. So that's what I mean from sort of the aggregate or average behavior that we are working with. सो एक किस्म की जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको आप कह जी रहे हैं जी, कि हम एवरेज आउट कर देते बिल्कुल। हैं। ओके। सो लाइक अगर आपकी करंट फ्लक्चुएट कर रही है सपोज 100 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन के अराउंड, एंड इट्स एनीवेयर बिटवीन 90 to 110 ट्रिलियन, डजंट मेक अ डिफरेंस। ओके। ओके, थैंक यू। So even though like every single electron is a quantum system in itself, when in whatever lattice the crystal is providing, but we are not dealing with individual electron, we are not dealing with individual quantum system. Quantum computers, on the other hand, they in there we are dealing with individual particle or individual quantum system. Okay. एग्जैक्टली यही यही एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन आमतौर पर पाई जाती है ना, कि वो क्लासिकल बिहेवियर बन जाता है जब आपके पास ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, तो वो फिर क्लासिकल कंप्यूटिंग बन जाती है। जी जी। थैंक यू। Okay, so let's come to a quantum computer. The quantum computer है ना, the simplest imagination that you can build in your mind is imagine like 10 atoms in a lattice. कि एक atom इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। और imagine every atom is a hydrogen atom. And imagine कि हम इस पूरे सिस्टम को एक डार्क प्लेस में रखा हुआ है, और जो फोटॉन इस तरफ जा रहे हैं या यहाँ से आ रहे हैं, they have an energy which is equal to the energy difference between orbit 1 and orbit 2 of the hydrogen atom. अब इसका मतलब है कि when we will send a photon to this atom, the electron can go from orbit 1 to orbit 2 by absorbing. और अगर हम दोबारा वही एक फोटोन भेजते हैं जिसकी उतनी ही एनर्जी है, तो the electron can jump back from orbit 2 to orbit 1 because of the stimulated emission. So we are restricting our individual quantum systems to just work between two levels. और ये जो two level quantum systems हैं, we call them quantum bits or qubits. So a quantum system is just a collection of qubits, and a qubit is just a two-level quantum system. Or itself, it's very hard to build a quantum system that only has two levels. So what we actually do, we take a system, we isolate it, and even though it has many levels, we decide that we are only going to work with two of those levels. So the system transition only between this and that level, either go up or go down, or maybe in a superposition of these two level states. So that's how every quantum system is being built right now. So there are like several physical setups. Well, like there's a trapped atom system, there's a trapped ion system, there's a photon-based computing. There are like superconducting oscillators. अब जो सुपर कंडक्टिंग ऑसिलेटर होते हैं उनमें भी लेवल काफी होते हैं, बट वी डिसाइड टू वर्क विद ओनली टू फर्स्ट एंड द सेकंड लेवल. We were working with only two levels. So all of these systems, we call them qubits. So तो जो quantum computer है, it's different from classical computer, that there are no transistors, there are no logic gates जिनके अंदर से करंट फ्लो कर रही है. So a quantum system is a collection of qubits, and individual qubits are sitting physically at different places. And like the latest quantum system, which is being built using Rydberg atoms, उसके अंदर जो qubits हैं, we move them physically around. But for now, let's imagine that there's a chip जिसके अंदर हमने we have built qubits, and they're physically separated from each other. There are ways to make them interact, but physically they are separate systems.
So that's one part of quantum computer, that we have qubits. And then जिस तरह जो क्लासिकल कंप्यूटर है उसके अंदर डेटा प्रोसेसिंग कैसी होती है कि यू हैव अ सर्किट, उसकी इनपुट वायर्स हैं, वहां पे आप लेट्स से 0110 कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो आप किसी का वोल्ट अप कर देते हैं वोल्टेज, किसी का वोल्टेज डाउन कर देते हैं, तो यू सेट डिफरेंट वोल्टेजेस, so which means that you are setting different inputs, and then according to that voltages the currents flows through that electronic circuit, and at the output there are certain number of wires, and then you read them कि उसके ऊपर different के ऊपर voltage high आया या low आया, and according to that you assign 0 and 1. But in quantum computer we have these qubits, so we can initialize them to, अगर आप 0110 करना चाहते हैं तो उसका एक इस सिस्टम को मैंने ग्राउंड में प्रिपेयर कर दिया है, इस सिस्टम को मैंने लेवल 1 में प्रिपेयर कर दिया, इस सिस्टम को लेवल 1 में, इसको ग्राउंड में, so that's how I give 0110 and so on initial state. Now this is the initial state. So how do I process the information? So the information processing here, it happens by sending different pulses. So let's say the algorithm has certain steps. So algorithm का maybe the first step is कि मैं इस qubit को superposition में ले जाऊं, इस qubit को invert कर दूं. So I'll send a pulse that transforms this qubit to a superposition state. I send another pulse to the second qubit that inverts its state, and so on. So जो क्वांटम गेट्स हैं, they are not flowing of any current, or they're not flow of energy, they're actually sending up different control pulses to these qubits that are sitting there. So and then once we have performed this set of pulses, once we are done, then the measurement process or the reading the output process is that I go to individual qubit and I read of what their state is. अब होगा ये कि जब हम रीडिंग के टाइम पे आते हैं तो हो सकता है ये क्यूबिट 0 पे हो, ये क्यूबिट 1 पे हो, और ये क्यूबिट हो सकता है 0 1 के सुपरपोजिशन में हो, ये क्यूबिट 0 1 के सुपरपोजिशन में, एंड सो ऑन. So maybe this qubit is entangled with this. So but whatever, when I make a measurement, at the output I might get an input 0110, output 0110 something, and then that measurement may not be representative of overall state. So what I do, I run my quantum algorithm again, an identical algorithm, and then I have the same state that I had before, and then I do the measurement, and this time I get something else. And what I do this process many times, and then I get a sort of different probabilities कि इस state की ये probability है, state की ये probability है, and that's where we try to get the information from. So a quantum computer at the end give us a state जिसका जो results हैं वो probabilistic हैं. Okay, so let me just recap. Okay, a quantum computer has two parts. One part is that it has a set of qubits, and the second part, which is the quantum algorithm or a quantum program in the hardware level is just a set of pulses that changes the state of individual qubit and maybe make them interact with each other as well. जी शबाज. यहाँ पर आपने जो मेजरमेंट की बात की, अगर मैं सही समझाऊं तो लेट से हमने 10 क्यूबिट प्रिपेयर किए हैं, एंड देन उनमें से कुछ सुपरपोजिशन में होंगे, कुछ नहीं होंगे, और अब मैंने उनके ऊपर मेजरमेंट की है. तो हमने ये पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स में कि जब आप क्वांटम सिस्टम पे मेजरमेंट करते हैं तो वो कोलैप्स, उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और वो किसी डेफिनेट स्टेट में चला जाता है. तो जी जब जी. मैं दूसरी दफा एल्गोरिदम रन करूंगा तो वो तो ऑलरेडी मैंने कंफर्म करने के लिए रन किया है, या वो दोबारा सुपरपोजिशन क्रिएट करने के लिए किया? नहीं, अब देखिए, जब एल्गोरिथम दोबारा रन होगा ना, तो वी विल गेट exactly the same state that we had before the measurement. क्यों? क्योंकि we starting from the same initial state, we are sending the same sequence of pulses, so we get to a superposition state of 10 qubits. Measurement के बाद it will collapse to a certain state, and then we wipe the slate clean again and start from zero. So each time we will run the algorithm, and before measurement we will have the same state, but after measurement different state each time, and then at the end we plot the probabilities. ओके ओके, Does सो that make एवरी sense? टाइम आप सिस्टम को इनिशियलाइज करते हैं और फिर एल्गोरिदम रन करते बिल्कुल. We have to initialize to the same initial state. जो यानी, so before measurement we need to get the same state in different measurement, क्योंकि अगर एक दफा measure करके उस पर दोबारा करेंगे वो तो फिर change हो जाएगा ना. So we have to start from the same initial state each time. हैं. ऑलराइट, थैंक यू.
Okay. So any question from anybody else? Hi, Dr. Faryad. I जी had जी a question. जब आप कह रहे थे हम स्टेट प्रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक थियोरेटिकली मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास एक वन डायमेंशनल स्पिन चेन है, तो जी जी प्रिपरेशन से मुराद ये हो सकता है कि जो सारी स्पिन है वो आइदर अप है और डाउन है, लाइक थियोरेटिकली दिस इज व्हाट वी हैव. जी But जी. how do we prepare experimentally? Like, do we have to apply some external field to make it a controlled system or something like that? Okay, good question. So it depends on the hardware system that you're using. And I mean, theoretically speaking, it's very easy. अगर आप सारी states को, let's say you want to prepare everything in zero state, then one thing is that we cool it down and maybe wait a little bit, and then it will go to the the ground state. But we might not be able to wait that long in certain system क्योंकि हो सकता है उनका decay time बहुत ज़्यादा हो. So then what we do is the easiest way is that for each individual qubit, I send a read signal and I read the state. उससे पहले जो भी state है doesn't matter, लेकिन measurement के बाद let's say I found out that my system has collapsed to zero state or one state. अगर वो zero state को कर गया है और मैं उसको zero में ही initialize करना चाहता हूँ, I leave it there. Or but if I measure it and I found it into one state and I want it in a zero state, I'll send a controlled not pulse, inverting pulse, which is just a photon of the same energy. It will flip the state. So I can do this thing, with each qubit. So I read off their state, and I will know what their state is, either zero or one, and then I send or I don't send a pulse accordingly to initialize the state wherever I want. Thank you. But for that purpose, like we have to get to an extreme low temperature to make sure all other degrees are freezed out. जी, so there is a huge engineering that has happened, before doing this step. अगर आप most of ज़्यादातर जो quantum computers, they're already working at like 1 millikelvin. So we're already there, and we have housed our qubits in a very thick, aluminum cylinder. So we have, knocked out everything else, and then we have put our quantum computer in the basement, and so that the microwave background radiations don't penetrate too much. We even have used concrete in the walls surrounding the basement, which is a special concrete. It doesn't have the cobalt isotope that radiates itself. So there's a lot that goes on before we turn on a quantum computer. So it's like $1 billion project to just house a quantum computer somewhere, because we have to make sure that there are photons only that we are sending, and all other photons, all other black body radiation for everything around is suppressed to as minimum as possible. And we haven't been able to do it with 100% accuracy so far. So that's why the quantum computers of today are still a little bit noisy because of these things. Thank you. All right. So any other questions? Okay, so let's move forward. So this is a question that I get to be asked a lot, and I'm sure some of you might have the same question in your mind, and maybe that's why you are here. And that is that why are quantum computers better than classical? The answer to this question actually is not immediately clear, and it's not usually obvious in a short span of time. But the uh, the 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 main the gist of the answer is this, that the quantum computers are better because we are able to process information in superposition. So like the qubits that are initialized in different states, we can prepare states that are in the superposition states of different classical states, and then we process the information in superposition. So roughly speaking, that's how the quantum computers get their advantage. But we can see it from a concrete algorithm a little bit later on.
Let me just briefly, go through these couple of things that might be too advanced for some of you, but you don't have to worry too much about it. So the qubit in mathematics, we represent it as, let's say, a column vector. A qubit 0 is 1 0 and qubit 1 is 0 1. And then the general qubit state is just a superposition of these two states. We can call it AB, or we can write it using this fancy sine and cosine terms. So the idea is this, that we have these superposition states. And just one nomenclature, there's this plus and minus state that we use as symbols for special superposition state, which are equal superposition of 0 and 1. But a plus state is with this plus amplitude and minus state is with the minus amplitude. And a quantum gate are what I was talking about, that we send different pulses to the qubits for different logical operations. Mathematically, we represent these gates as matrices. That this inverting gate X, which flips 0 to 1 and 1 to 0, has this matrix. And similarly, there's a hardware equivalent. There's a pulse that corresponds to this, but mathematically, this is just this gate. And similarly, this Hadamard gate, this is used to prepare equal superposition. If you have initial state 0, you apply the Hadamard pulse or Hadamard gate, you can get a plus state, and similarly a minus state. There are other, single qubit gate as well. So single qubit gates are operations that we perform individually on these qubits. So let's do a simple problem and see how quantum computer solves it. So a problem is this, कि हमारे पास एक string of number है और एक set of number है 0 से लेके let's say capital N तक, 0 1 2 3 4, लेकिन वो सारे नंबर ना jumbled up है set के अंदर, they are not in an order. So the idea is this: we want to find out a particular number. Let's say we want to look if 10 is there, and if it is there, उसकी कौन सी location है. So classically speaking, what we will have to do, we will have to let's say start checking each entry of this set. पहली entry देखें 10 है कि नहीं है, नहीं है, अगली check करें वो 10 है कि नहीं, नहीं 10. So keep going until you find 10 or until you go through the whole set. अब ये जो अनस्ट्रक्चर्ड लिस्ट की सर्चिंग है ना, दिस इज एन एल्गोरिथम दैट क्लासिकली इट रिक्वायर्स इन द वर्स्ट केस द सेम नंबर ऑफ क्यूरीज एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अगर उसमें कैपिटल एन आइटम्स हैं, यू नीड कैपिटल एन क्यूरीज टू दिस लिस्ट. ओके, सो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इट्स कैपिटल एन. It doesn't matter what algorithm you come from, you can actually show theoretically that there's no algorithm that can perform with fewer queries than n to find the number that we are looking for. Let's see how quantum computer solve this problem. Chat ke andar there are a few. Okay, there's a prompt from Shabazz and everything else is okay. All right. So Grover jo hai na, he came up with an algorithm sometime in the 90s, 90, I think 5 or 6 ke kareeb, that can solve this problem in only n square root queries to the list. ठीक है? और उसका जो algorithm I have sketched it here, and basically what it does, it performs the Hadamard transform on an initially prepared state 0. The सारी qubit को 0 0 में prepare कर दें, and then send a pulse to each state, and then prepare an equal superposition state, and that then you perform this process all times. Let me discuss it graphically. I think that would make this thing a little bit easier to understand. So what we do, we have like this state S. इसके अंदर ये जो W state है, suppose that's the solution that we are looking for. So a quantum algorithm, what it does, it has an oracle or a way that marks this state, let's say with some negative sign or with some color, and then this other part of the algorithm, it tries to. So the second step, tries to so this W is marked negative by this oracle, and then the next step tries to express the amplitude of the items that we don't want in the answer
and tries to enhance the amplitude or probability of the item that we are looking for. So basically ये जो figure है ना, ये वाली, this shows in a nutshell how quantum algorithm work. So जो classical algorithm है ना, उनकी thinking बड़ी sequential होती है कि आप ने कोई problem solve करना है, so you think sequentially. जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने घर से दही लेने के लिए किसी को भेजना है, तो यू कैन गिव दैट पर्सन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि भाई घर से बाहर निकलो, राइट टर्न लो, कितने कदम चलो, फिर वहां से लेफ्ट टर्न लो, फिर वहां से राइट लो, फिर इतने कदम चलो, वहां पे नुक्कड़ पे ये दुकान है, उसको पैसे दो, उसे ये दही लो और वापस आ जाओ. सो जो क्लासिकल प्रोग्रामिंग है और जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं, दैट्स हाउ दे वर्क. और उनकी प्रोग्रामिंग भी एसेंशियली इट्स लाइक दिस. अब जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड क्लासिकल प्रोग्राम हो, एसेंशियली इट्स दिस, अ वेरी नीट सेट ऑफ सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस. लेकिन जो क्वांटम प्रोग्रामिंग है, वो जो है बिल्कुल मुख्तलिफ तरह से काम करती है. उसमें वी हैव टू थिंक if there is an answer that we are looking for example, इस प्रॉब्लम में there is a certain number w that we want at the output. और हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में the measurements are probabilistic, so all we have to do is enhance the probability of the answer that we are looking for. So जो algorithm है, it sequentially it works in such a way that it tries to suppress the probability of undesired answer and tries to enhance the probability of the desired answer. And that's how the quantum algorithms mostly work. So here's just an sort of an application or a simulation of this result. So ये दो दफा जो है ये algorithm को run किया है. So this is how you see the output. Like there's a certain number 101 that item I was looking for. So इसकी probability enhance हो गई है. There are other possibilities as well, but their probabilities are reduced. So before I switch gear and talk in general about applications, is there any question? डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये ग्लोबल एल्गोरिदम पे बताइएगा कि अगर मेरे पास क्लासिकल एल्गोरिदम है और एन जी जी. आइटम्स हैं, पहली बात तो ये कि जिस चीज को हम ढूंढना चाह रहे हैं उसका हमें पहले से पता है कि फलां चीज को हमने ढूंढना है. ठीक है, लेट से डब्ल्यू जो आपने यहाँ पे हाईलाइट किया है. तो जब आपने इसको रेड किया है तो मेरे माइंड में ये आ रहा है कि मैंने तो पहले इसको ढूंढा हुआ है, तो फिर मैं इसको एनलार्ज क्यों कर रहा हूँ और इसको फिर मैं रूल आउट क्यों कर रहा हूँ बाकियों से, यानी अनडिजायर्ड को फिर मैं यानी अनडिजायर्ड का भी मुझे पहले से पता है और जिसको मैंने ढूंढना है उसका भी मुझे पहले से पता है. तो ये ग्रोवर एल्गोरिदम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इस प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी को कम तो कर रहा है, लेकिन कैसे? आई मीन कि उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो अननाउन चीज है जिसका मुझे पहले से ही नहीं पता, मेरा डब्ल्यू ही अननाउन है, तो वो मैं कैसे तलाश करूंगा? आई होप कि मेरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया है. जी जी, मुझे बिल्कुल समझ आया, क्योंकि मैं ये सवाल 50वीं दफा सुन रहा हूँ. मुझे पढ़ाते हुए 3-4 साल हो गए, एंड एवरी टाइम आई टीच ग्रोवर एल्गोरिदम दिस क्वेश्चन कम्स अप. एंड आई नो जी. इट्स वेरी काउंटर इंट्यूटिव इन द बिगनिंग. तो उसमें ना 2-3 चीजें हैं. पहली चीज ये है कि वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन knowing the answer and verifying the answer. मैं काफी शायद आई assume कि काफी सारे लोग जो हैं वो थोड़ी बहुत उनकी मैथ की बैकग्राउंड होगी. लेट्स से आई हैव a differential equation or just a simple equation. So there are two things. Number one is finding the solution. अगर आपके पास differential equation है या कोई और equation है and you have to find its solution, that's one thing. और एक दूसरा काम है कि आपको एक सोल्यूशन दे दिया जाता है, एक कोई फंक्शन दिया जाता है ना, आपसे पूछा जाता है कि चेक वेदर दिस इज अ सोल्यूशन और नॉट. सो ये दोनों ना काम डिफरेंट है. जो ये दूसरे वाला काम है, इसको हम आप यूं कह लें कि वी आर ट्राइंग टू वेरीफाइंग द आंसर, और उसके लिए तो यू जस्ट हैव टू प्लग इन. सो दैट्स द इजियर पार्ट, दैट यू सी वेदर दिस इज अ सोल्यूशन और नॉट. और पहले वाले में यू आर ट्राइंग टू फाइंड द आंसर. सो ये जो एल्गोरिथम है, पहली बात तो ये है कि जो आप कह रहे हैं कि डब्ल्यू हमने फाइंड करना, हमें पहले ही पता है कि डब्ल्यू फाइंड करना है, तो वो तो ज़ाहिर है कोई भी प्रॉब्लम होगा इवन क्लासिकली भी. अगर नंबर 10 जो है मैं आपसे कहता हूँ लिस्ट के अंदर ढूंढे, तो मैंने आपको बता तो दिया कि व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. क्योंकि अगर तो हम बताएंगे नहीं कि क्या ढूंढ रहे हैं, तो द प्रॉब्लम इज अनडिफाइंड. सो 10 जो है उस लिस्ट के अंदर आपने ढूंढना है, तो वो 10 तो मैंने प्रॉब्लम के अंदर स्पेसिफाई कर दिया कि आई वांट टू सी वेदर 10 इज देयर और नॉट. ओके, सो दैट्स वन थिंग. और दूसरा ये है कि अब आपने लिस्ट के अंदर ट्रिलियन आइटम्स हैं.
and you start going from the first number, maybe the first number is 100, the next is 1000, the next is 0, फिर -1 है, जो भी है आते जा रहे हैं। और अब कर क्या करें, आप उनमें से जब एल्गोरिथम प्रोग्राम लिखेंगे, यू विल क्लासिकली भी मैं बात कर रहा हूँ क्लासिकली, सो एक जाके उस लिस्ट का पहला आइटम पकड़ेंगे एंड यू विल कंपेयर इट विद 10 कि वेदर दिस इज 10 और नॉट। अगर वो 10 है तो यू स्टॉप योर प्रोग्राम एंड देन से ओके देयर इज 10 एट दिस लोकेशन इन दिस लिस्ट। अगर वो 10 नहीं है, यू गो टू द नेक्स्ट एंड पिक द आइटम। एंड मे बी आपने हो सकता है कोई लूप लगाया हुआ है, लूप के अंदर एक इफ स्टेटमेंट है जिसके अंदर यू आपने लिखा हुआ है कि जी जो ith आइटम है इस लिस्ट की इज इफ दिस इज इक्वल टू 10 और नॉट। सो इस तरह की कोई कंडीशन लगाई गई है। सो ये जो चीज है इसको हम कहते हैं ऑरेकल। सो जो ऑरेकल है, the oracle doesn't know the answer, but oracle can tell you whether the answer that you are providing is the one that satisfies the criteria or not। तो ये जो W है ना, तो ये तो हमने प्रॉब्लम के अंदर स्पेसिफाई कर दिया कि आई वांट टू लुक फॉर W इन द एल्गोरिथम। और जो क्लासिकल ऑरेकल और क्वांटम ऑरेकल में सिर्फ एक फर्क है, जो क्लासिकली वी आर चेकिंग इंडिविजुअल एंट्रीज ऑफ द लिस्ट, जबकि इन क्वांटम ऑरेकल्स वी अज्यूम कि वी हैव एक्सेस टू एन ऑरेकल दैट कैन चेक द स्टेट इन अ सुपरपोजिशन। कि अगर आप उसको लेट्स से एक सुपरपोजिशन पास करते हैं नंबर 10 11 12 13 9 की और 10 की सुपरपोजिशन, तो इट ओनली टेल्स यू कि which one of these item is the one that you're looking for, so you उसको mark कर देगा let's say with the red color or negative sign or whatever। so जो oracle है, it's only checking and telling us whether the certain item satisfies our criteria or not। It's not finding it from the list, because that's what we are trying to do in the overall problem। Does it make it a little bit clear? जी जी बिल्कुल। मैं असल में वही क्योंकि हमारे माइंड में आमतौर पे ये आता है कि जी क्वांटम कंप्यूटर जो है ना वो जादू की छड़ी से हमें अननोन आंसर्स भी निकाल के दे देगा। तो वो उस सिलसिले में अक्सर बहस रहती है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि शायद ग्रोवर एल्गोरिथम वही बात कर रहा है। दूसरा एक सवाल बिलाल की तरफ से है, तो अगर आप चैट में देख लें या मैं पढ़ दूं। मैं तो देख सवाल लेता ये हूँ है कि व्हाट डज इट बिलाल। मीन व्हेन द ऑरेकल मार्क्स एन आइटम विद अ नेगेटिव साइन? डज इट हैव एनी फिजिकल इंटरप्रिटेशन? No, it doesn't. So it only helps in the language of quantum computing if we do it with negative sign। देखिए जो oracle है basically, yes, और oracle समझ लें कि oracle is part of the person who has given you the task of finding the item in the list। So आप ये कि लेते हैं कि उस लिस्ट से जाके आइटम निकालते हैं, you pass it on to the oracle and ask it के yes and no, कि यही आइटम है जो you're looking for, it is not। वो yes कह देगा, ये no कह देगा। So it's equivalent in saying okay, is your answer -1 or +1। So the negative sign helps in the language of quantum algorithms, because it's a number with the magnitude 1, and it's a number that I can write as exponential iota 180 degree and so on, but it's only incidental। Any other question? सॉरी, इज दैट डब्ल्यू यूनिक या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं इस सेट में? तो हमारा एल्गोरिदम कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से वाले डब्ल्यू ढूंढ रहे हैं हम? तो W इज नॉट यूनिक। जो सेट है उसके अंदर एक से ज्यादा W भी हो सकते हैं, एंड द एल्गोरिथम विल बी एबल टू फाइंड देम। और अगर ज्यादा W होंगे तो इट विल एक्चुअली बी एबल टू फाइंड देम इन बिट क्विकली। I haven't included in here, but you can check in any standard text the number of queries are actually divided by the number of times the W is there। थैंक यू। By the way, एक और जो चीज it's sometimes lost initially। So this is one of the toy problem। Okay, जो toy problems थे शुरू में डायचोजा और एक दो और simple algorithms थे, they were invented by the community just to see if there is a problem that can be solved quickly by a quantum computer। It doesn't mean that this problem has an immediate application। जैसे ये ग्रोवर algorithm है, तो as a search algorithm, I think it will be about 30 to 40 years before
this algorithm find any application even after having good quantum computers. क्यों? क्योंकि इसका जो Oracle है उसकी implementation is a big thing. We have to build, quantum random access memories and quantum comparing circuits that can do all of this thing in superposition and so on. जो ग्रोवर एल्गोरिदम की अभी जो हम यूज भी करते हैं, वी डोंट यूजुअली यूज इट एज अ सर्च एल्गोरिदम, वी यूज इट एज एन एम्पलीट्यूड एम्पलीफिकेशन एल्गोरिदम इन मेनी अदर एल्गोरिदम. क्यों? क्योंकि इट्स इजियर to imagine it as an algorithm that amplifies the state, the amplitude, that amplifies the probability of a certain state. कि हमारे पास एक सुपरपोजिशन स्टेट है, उसके अंदर a plus b plus c plus d काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं, and we want to amplify a particular answer. So we can easily use this algorithm because we know which one we want to amplify. So we can construct a circuit. It will start giving it a negative sign and amplifying it. So it's mostly used as an amplitude amplification algorithm rather than a search algorithm. Lekin as a search algorithm, we see how the quantum advantage, comes in as compared to the classical problem. Okay, so let me give my concluding, thoughts. So there are other applications of quantum computing, and one of the leading application is actually the simulation of quantum systems themselves. जैसे atoms हैं, molecules हैं, या chemical reactions हैं, या इवन मटेरियल्स हैं, या जैसे LHC के अंदर there are different nuclear reactions which are essentially the interaction of different quantum systems. So in सब की simulation के लिए quantum systems का जो use है, that is an application at the forefront of quantum computers. Not as a search algorithm जो कभी हमने देखा है, not even as Shor's factoring algorithm कि उससे कोई cryptography हो जाएगी तेज, because for that you really need very very large quantum computer. लेकिन ये जो प्रॉब्लम मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जैसे मोलेकुलर सिमुलेशन या सिमुलेशन ऑफ इंटरैक्टिंग क्वांटम सिस्टम, उसके लिए वी डोंट नीड वेरी लार्ज क्वांटम सिस्टम. एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, फर्ज करें आपके पास एक क्वांटम सिस्टम है जो 2 लेवल सिस्टम है, एंड यू हैव 10 क्वांटम सिस्टम, तो 10 आपके पास क्वांटम सिस्टम है, एंड यू वांट टू सिमुलेट देयर इंटरेक्शन. Without quantum computer, मैं कैसे करूंगा? I'll write the state vector and I'll put the state vector in Schrodinger equation, and suppose I know the Hamiltonian, and I'll try to solve the Schrodinger equation. अब let's see what will it take. जो 10 particle state है, उसको लिखने के लिए I need a state vector with 2 power 10 entries. Okay, because for a single system I need a 2 level and 2 entries. जो 2 systems उनके लिए need 4, क्योंकि 4 possible states हैं, so I need a state vector with 4 entries. For 3 system I need a state vector with 8 entries and so on. So for 10 particle I need 2 power 10 entries, and then the Hamiltonian is going to be a matrix which is 2 power 10 times 2 power 10. So this is like about 1,000. So 1,000 by 1,000 matrix applying over 1,000 long column vector. We might be able to do it with our laptop. But let's now imagine you have 20 particles. So 20 particles is like 1,000 square, which is going to be like a million. So a million by million matrix applying over a column vector of million, and you might have to do it a few trillion times agar aap, you're working with a very small step. So very soon, your biggest supercomputer, even with 30 particles, won't be able to do it. So we are done. So classically, there's no way you can simulate this, 30 particle system. And just to give you an idea of, practical problem, जो हमारे body में proteins हैं, they have like hundreds of atoms in them. If we want to, do drug design या physiological reactions की जो simulation करना चाहते हैं computer के अंदर, so these classical computers, they are simply out of the way. Quantum computer, on the other hand, we can do it, a 30 particle quantum system, we can simulate it with a quantum computer that has qubits of the order of 30. Okay, of the order का मतलब है maybe 40-50 qubits के साथ I'll be able to simulate it. So with
a very good quantum computer that have like 100 qubit that already has a very fantastic application in simulating quantum system. So this is, many people are saying that the simulation of quantum systems have, this is going to be one of the first area of application of quantum computers. So this is like one area. That's why there are a lot of drug companies and bio companies they're investing money to build quantum computers and quantum aware workforce. The other area that is quantum machine learning. This is also an area जिसके अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग हैज एप्लीकेशन. बट मेरा जो अपना एक्सपीरियंस अभी तक इसमें है वो ये है कि क्वांटम मशीन लर्निंग में जो क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस हैं दे आर एक्चुअली less as a quantum computer itself, but as an other way of doing classical machine learning ज्यादा है. मैं क्योंकि जो quantum machine learning है, it implements the machine learning algorithm in a totally different way. It actually works in Fourier domain instead of the usual domain जिसमें हम काम करते हैं. So this ये जो alternative way है of doing machine learning, इस तरह से इसकी जो है वो applications ज्यादा नजर आ रही हैं. And then there are, potential applications in finance and optimization problems. Uh, and also, there might be applications in quantum, but the quantum sensing may, we might have applications right away because quantum sensors are usually small quantum system, like 1 qubit, 2 qubit system. Or जो quantum communication है, that already is happening. So quantum communication में तो quantum communication application, there are already commercial systems available. So this is like uh, a very small set of subset of the applications of quantum computers. Or again, if you are looking for a career path in quantum computers, there are many ways that you can, branch into. The most of the jobs right now are actually on the hardware side, and the hardware side, people are looking for RF engineers and uh, you know electrical engineers, electronics engineers, cooling engineer, refrigeration engineers. क्योंकि जो quantum systems हैं, they require a very sophisticated level of engineering. So, or of course, quantum engineers or जो quantum information specialists हैं, they are required. But also there are a lot of investment in quantum software building that is going on right now. जिस तरह से हमारे जो लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर्स हैं जो हम यूजुअली यूज करते हैं, जो हार्डवेयर है उसके ऊपर देयर इज a layer that is interacting with the hardware, and there is an operating system, and then there is high level programming languages. So all of these stacks, they are being built right now. और चूंकि जो quantum hardware है अभी there's no clear winner right now, so all of these things are evolving. तो इस साइड पे जो है I see a lot of jobs coming up. People are looking for people who have computer science background, that they know how to build operating systems and programming languages, but they also have knowledge of quantum computers because they are going to build these uh, different layers on top of quantum computers. So a person who is well versed in quantum computing and computer science, they are in high demand right now. And then of course there is a application domain like quantum physicists who wants to simulate molecules and quantum systems, quantum biology, and then of course mathematicians and there's a lot of work in error correction. I sidestepped this part that the quantum computer that we have right now, they are prone to noise. So there's a lot of work going on in error correction code. So this is a whole new career path in quantum computing. So with this, I would like to thank all of you, for staying till the end. Or I'm still here for any questions or any interaction या कुछ मैंने part छोड़ दिया है या कोई और part है तो please feel free to go ahead and ask. थैंक यू सो मच. बहुत मुख्तसर और जामे किस्म की टॉक थी और उम्मीद है कि सामीन ने काफी से सीखा होगा. अगर किसी का कोई फाइनल कमेंट या क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं. And apologies again from me for being late. Sir, I have a question about Hadamard operator. जी जी. That
we use this operator in various quantum operations. Is that any specific way to find this operator, or we use it as you know it's is there any way that we can find this operator specifically? I will just take values and then put it into our quantum computing operators and operations. Okay, so I think perhaps your question can be broken down into like couple of parts. Number one is जैसे आप शुरू में कह रही थी कि काफी जगह पे यूज होता है. So जो हेडामार्ट ऑपरेटर है या हेडामार्ट गेट है, इट्स वेरी कॉमन इसलिए कि ये ना सुपरपोजिशन स्टेट प्रिपेयर करता है और बहुत सारे एल्गोरिदम में वी नीड टू प्रिपेयर सुपरपोजिशन स्टेट, सो दैट्स व्हाई इट्स यूज्ड अ लॉट. और आई अनफॉर्चुनेटली डोंट अंडरस्टैंड कि आप वैल्यू फाइंड करने से क्या मुराद ले रही थी. शायद आप कह रही हैं कि अगर आपको इसके अलावा कोई और ऑपरेटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, कि आप इसको अगर थोड़ा सा रीवर्ड काइंडली करें. Sir, I actually want to ask that is there any specific way to find Hadamard operator, or we just have this value? Actually, I want to ask that how Hadamard operator comes. That how do we know आप शायद that ये this पूछेंगे. is an operator which is give 100% probability, and how its values come? अच्छा, शायद आप ये पूछेंगे हाउ डिड वी डिस्कवर हेडामार्ट ऑपरेटर. तो दैट्स वेरी Yes. इजी. अगर आप लेट्स से यू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि आई एम इन जीरो स्टेट एंड आई वांट टू गो टू अ स्टेट ऑफ इक्वल सुपरपोजिशन, or I am in one state and I want to go to equal superposition state. So what operation will do it? And you solve this inverse problem and you will, arrive that operator. Thank you so much, sir. Thanks for the guidance. लेकिन ये इस तरह से वैसे डिस्कवर नहीं हुआ था. Actually, quantum mechanics is like about 90 years older than quantum computers. So people in physics, they already knew, and we do this thing in undergraduate quantum physics already. और 1920s 30s से लोगों को पता था कि if you send different signals to quantum system, तो जो time dependent Schrodinger equation उसके solution से we know what type of electromagnetic field would give rise to what type of outputs, and this Hadamard pulses and these things were already known. They do this thing. So when quantum computing became, people already knew before this that how to prepare superposition states, and this operator does this thing. जी, किसी और का कोई सवाल? Yes, I do have a question. Thank you, जी Dr. जी प्लीज. Faryad, for this talk. मेरा क्वेश्चन लाइक एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा क्योंकि मैं लाइक एक्सपेरिमेंटल से familiar नहीं हूँ मोस्टली लाइक सॉरी थेरेटिकल साइड का मुझे थोड़ा आइडिया है. सो हम बेसिकली ये बात कर रहे थे शुरू में कि क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए हमें एक सिंगल क्यूबिट ऑपरेशन चाहिए, राइट? जी जी. For single qubit operation, do you mean like an isolated spin? जब qubit की बात आती है तो मेरे माइंड में जो फर्स्ट चीज आती है लाइक वो स्पिन है, अप और डाउन. तो सिंगल स्पिन तो आइसोलेट नहीं हो पाएगी. लाइक हाउ डू वी प्रिपेयर such kind of system to have qubits? So we don't work with two-level systems. Okay, what we do, we work with a multi-level system, but we restrict ourselves, and it's extremely painful to do that, to work only with two of the many levels that are available in the system. और लेट्स से आप अगर सुपर कनेक्टिंग ऑसिलेटर की बात करें, विच इज वन टाइप ऑफ वेरी वाइडली यूज क्यूबिट, तो उसके अंदर वी हैव लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और सब लेवल जो हैं उनका एनर्जी गैप डिफरेंट होता है. अगर आपके पास सब लेवल का एनर्जी गैप सेम हो, then that system is useless as a qubit, so we just throw it away. So we prepare a system that have different levels, but all levels have different gaps. So
आप उसमें से दो लेट्स लेवल चूज कर लेते हैं कि आई एम गोइंग टू वर्क विद दिस एंड दिस। तो वर्क विद का मतलब ये है कि जितनी भी अब आप उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजेंगे, यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है इट इज सच दैट द फोटोन एनर्जी मैचेस दैट गैप। तो उससे क्या होगा, अगर सिस्टम नीचे वाले लेवल में होगा, इट गेट्स द फोटोन, इट अब्सॉर्ब्स इट एंड जंप्स टू द अपर लेवल। अब जब उस लेवल में है एंड यू सेंड द फोटोन ऑफ दिस गैप एनर्जी अगेन, तो उस सिस्टम के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि ट्रांजिशन बैक टू द लोअर लेवल। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वाला जो लेवल है उसका गैप ही डिफरेंट है। सो इट्स नॉट द सेम जिसको आपने फोटोन भेजा। अगर आप एक ऐसा फोटोन भेज देते हैं जिसका गैप ऊपर वाले से मैच करता है, तो ऑफ कोर्स इट विल जंप देयर एंड देन यू हैव एरर इन योर कंप्यूटर। So we work with multi-level system, but we try to only use photons that have a fixed energy gap, so that essentially it's a two-level system. Thank Does you. it make sense? Yeah, thank you so much. हाँ, जैसे आसिफ के अगर आप स्पिन सॉरी के साथ भी काम करना चाहते हैं ना, देर आर एक्चुअली स्पिन क्यूबिट्स एज वेल। तो वो स्पिन आइसोलेटेड नहीं होती। वी ट्रैप दो स्पिन्स इन डिफरेंट वेकेंसीज इन अ लैटिस। तो अब वो जो स्पिन है उसके असल में उसके इर्द गिर्द जो सिस्टम है उसके और भी लेवल्स हैं, बट वी सेंड माइक्रोवेव पल्सेस। वी यूजुअली वर्क विद माइक्रोवेव क्योंकि वो उनकी एनर्जी गैप जो है ना वो स्पिन्स को उसके माइक्रोवेव रेंज में आ जाता है। सो देन वी आर ओनली फ्लिपिंग द स्पिन अप एंड डाउन एंड वी आर नॉट एड्रेसिंग द सिस्टम अराउंड इट। बट उसके लिए तो हार्ड नहीं होगा लाइक फाइन ट्यून करना किसी एक क्यूबिट को टारगेट करना? It's extremely hard. That's why there are only a couple of companies you can count on fingers of your hand. कितनी companies हैं who are able to make these quantum computers? थैंक यू। अनदर थिंग लाइक अगर हम क्वांटम डॉट्स को देखें, दैट्स अनदर वे टू प्रिपेयर दीज क्यूबिट्स। जी जी तो उसमें लाइक उसमें भी आइसोलेटेड नहीं है, बट इफेक्टिवली तो हम ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो देर आर लाइक मल्टीपल वेज, इज देयर एनी जी जी जी, there सिंगल? are many ways. The only thing है कि you have to make sure कि जो भी आप तरीका चूज करें, there will always be a possibility of going out of your two levels. कि आपका सिस्टम जो दो लेवल आपने चूज किए उनमें है ही नहीं, वो कहीं और गायब हो गया। सो ये जो लीकेज है वो भी होता है। सो जो क्वांटम सिस्टम है आज के, इसीलिए दे आर, वी कॉल देम नॉइजी बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज इश्यूज, बिकॉज देयर इज नो टू लेवल सिस्टम and we are forced to work with multi-level system, and we are trying only to work with two levels. But we know or क्योंकि microwave background radiations भी हैं which are giving us photon of all energies from 0 to infinity anyway. So there is some chance of other transitions happening. So all of these things give errors, but it is extremely uh, important to note that engineers have put in last 30 years, and there are like billions of dollars that have been put into these things to make sure that we develop systems that get rid of all the photons but accept the ones that you are sending in. बिल्कुल मैं इमेज मैंने इसमें अभी जो थोड़ी सी बात की है, इफ द लेवल ऑफ इंजीनियरिंग दैट गोज इनटू इट, आपने अपना क्वांटम कंप्यूटर बनाना है, उसको रखना भी बेसमेंट में है, मनो मिट्टी के नीचे, और फिर उसके गिर्द जो कंक्रीट है, यू हैव टू बी अवेयर के कंक्रीट के अंदर जो मेटल्स कोबाल्ट से चीजें यूज होती हैं वो भी रेडियो एक्टिव है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका कंक्रीट भी उस क्वालिटी का है कि उसमें वो नहीं है। फिर जो स्टील आपने जो हाउसिंग यूज करनी है उसके अंदर जो मटेरियल है, यू मे हैव टू मेक श्योर कि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐसी ना हो जो कि रेडियो एक्टिव है, क्योंकि ऑल ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स इट हैज अ हाफ लाइफ। there's no particle that has an half life infinity, so everything decays after a certain time. So you have to make sure that all of the material that you use, none of them radiates too often. थैंक यू। अच्छा, किसी और का कोई सवाल या कमेंट? अच्छा, ये आसिफ के सवाल पे डॉक्टर साहब मैं जी जी कमेंट करना चाहता था। अब हम लोग भी मतलब मैं भी एक्सपेरिमेंटल साइड पे आ गया हूँ, तो क्वांटम सेंसिंग के ही हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ये जो आप बात कर रहे थे, सारा सारा दिन बैठ के हम जो है वो, मेरे पास रुबिडियम 85 है और उसके 6 MF लेवल्स हैं फिजिकल टू 3 मैनीफोल्ड के।
तो सारा दिन बैठ हम्म के हम जो है वो सुपरपोजिशन ही क्रिएट करते हैं और टू लेवल्स को ही आइसोलेट करते हैं. एंड इन अ रियल वर्ल्ड देयर इज नो लाइक एग्जैक्ट टू लेवल सिस्टम. तो वो बात आपकी मैं रिलेट कर पा रहा जी था जी अपने बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेरिमेंट ऐसे ही के साथ. ऐसे ही। दूसरी चीज जो आप बात कर रहे थे वो मनो मट्टी वाली. अभी तक हाँ बिल्कुल ये बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मैंने सुना है कुछ लोग ऐसी तजवीजें ढूंढ रहे हैं जिसमें इससे बचा जा सके और आपका जो खर्चा नॉइज कैंसलिंग और एनवायरनमेंट के इफेक्ट को डीकपल करने पे लगता है वो उससे बचा जा सके. मसलन माइक्रोसॉफ्ट की मैंने खबर सुनी थी, उन्होंने कोई टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटर बनाया है. आई डोंट नो हाउ मेनी क्यूबिट्स. लेकिन टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटर में तो मतलब आपको एरर करेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, क्योंकि आप टोपोलॉजिकली प्रोटेक्टेड होती हैं आपकी स्टेट्स एंड देन यू कैन यूज दोज बैंड्स. हमारे साथ फंसी हैं वैसे वो भी नेस मेटर थ्योरी पे काम कर रहे हैं. लेकिन आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मैं सच्ची बात है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स, लेकिन बट आई gathered that topological qubits in principle in theory they are fantastic, लेकिन उनको असल में एक्सपेरिमेंटली इंजीनियर करना और क्रिएट करना और सस्टेन करना, दैट इज एक्सट्रीमली हार्ड असल में. और अभी जो टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स जो क्लेम भी आए हैं, दे आर नॉट 100% प्रूवन बाय इंडिपेंडेंट पीपल के व्हाट दे आर लुकिंग एट इज एक्चुअली रियली टोपोलॉजिकल स्टेट. बट आई बिलीव दैट टोपोलॉजिकल स्टेट्स आर पॉसिबल. और मसला ये है कि उसमें भी एरर्स हैं. अब वो एरर्स जो है, देखिए वो एरर्स शिफ्ट हो जाती हैं. द एरर्स फ्रॉम द क्यूबिट्स दे आर ऑल शिफ्टेड टुवर्ड्स द सराउंडिंग equipment and measurement and preparing system that has to prepare that. So at the end of the day we are still there. कि बजाय इसके कि the errors are in qubits and your measurement and control system and the initialization system is much better. और उसकी बजाय you let's say theoretically prepare qubits that have zero errors, but no, that error, that doesn't mean the error in the quantum computer has gone to zero. It only means, at least right now, practically speaking, the error has shifted to the equipment that is trying to set up those states. You get what I mean, that you're not even sure whether you have the state or not. राइट राइट. रीड आउट में प्रॉब्लम होगा. जी जी. ओके. किसी और का कोई सवाल या कमेंट? If there is none, then I think we thank you, Dr. Faryad, again. आपने Okay. टाइम निकाला और मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया. हम इस तरह की ये सीरीज जो है ये करते रहते हैं. वही बात है कि बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो स्टूडेंट के लेवल पे आके या पब्लिक के लेवल पे आके किसी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो आपने बहुत अच्छे से ये काम किया. उम्मीद है मुस्तकबिल में भी आपको कभी कभार हम तंग करते रहेंगे. जी श्योर. ठीक. ओके. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीबॉडी जिसने ज्वाइन किया एंड जिन्होंने सवाल किए. आप सबका शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.